Hello everyone. Let's continue our discussion on your sample paper. And now we move to question number 8 till question number 7 I already discussed in the previous lecture. Let's move to question number 8 in your sample paper. Question number 8, we talk about Jomo Kenyatta's rule. We go to Kenya and we talk about what were the controversies associated with his rule. Now, Jomo Kenyatta, initially, his role was a major one in liberating Kenya, in fighting for Kenya's independence and, pushing the colonizers away. But once he came to power mein aane ke baad, what he did was, he also started taking or misusing his power. Okay? So you can begin this answer by stating that, Jomo Kenyatta's rule was filled with a lot of problems ever since he took power till his death. Okay? First, the major problem was favoritism that he was doing. Okay, he was favoring a certain section of tribes. Okay, he was, a certain section of people, and he was not paying attention to the other section of people. So this favoritism, that was a very prominent factor that was running in his administrative thing. Okay, second important factor that we come to. Okay, you can first write favoritism part. Here itself you can write he was helping out his own ethnical group, Kikiu tribe. Okay, giving them administrative positions. Okay, in the government. Okay, so favoritism was here. Then you can also write that he was responsible. He was called out for redistributing land to a particular tribe only. That was, of course, Kikuyu tribe. Okay. So, redistribution of land. This could be the second factor. Redistribution of land to Kikuyu tribe only. This could be another controversy. The third part of his rule was that he came as a democrat, became a dictator. Okay, you came as somebody who was going to not rule over the people but be a leader for them. But what did you became? From leader he became dictator. So his transition from a leader to a dictator, this could be the third controversy. Fourth could be, of course, there was a lot of social tension that was going on. Because of social tension, because of rapid population. अभी क्या हो रहा था ना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, डिमांड ऑन रिसोर्सेज ज्यादा थी, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे ज्यादा. ओके, इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी था काफी ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इशू. This was again prominent. Okay, there was lot of law and order issue that was surrounding his rule. In cities, everything was disorderly. Okay, and that's why, of course, we saw a protest against him and displacement of his rule. But these are 4 points more than enough to answer this question. What were the controversies surrounding his rule, Jomo Kenyatta's rule? In the context of the anti-apartheid movement in South Africa, discuss any 4 contributions of the person shown. Now you know who the person is. Nelson Mandela. His contributions cannot be denied. He gave a lot of contributions when it comes to the anti-apartheid struggle happening in South Africa. So let's discuss about his contributions. You can first of all, I know you think that everybody knows, oh, who's this person? He's Nelson Mandela. But just state that, the person shown in the picture is Nelson Mandela. Okay, so begin your answer that way. The person shown in the picture is Nelson Mandela. Okay, his fight against the anti-apartheid movement was a strong one. He put up a strong front. Okay, his efforts, his struggle is what brought that movement to its culmination. Okay, of course, in the year 1990s. So we can introduce this by this this quick introduction. Then you can start by writing first point.
President of African National Party. Okay, because African National Party was involved in the 1952 anti-apartheid defense campaign. So I'm writing it in short, African National Party, because it was involved in 1952 anti-apartheid defense campaign. Okay, one of the major contributions was this, that when he joined the party, he joined the campaign, he became a part of the campaign. Second, of course, you all know he was arrested time and again. Why? Because of his seditious remarks. Seditious means against the government, so replace the government. So because of his seditious remarks, he was arrested time and again, okay, throughout his struggle. As a matter of fact, if you see, he was also sentenced to life imprisonment. So that was the fight that he put up in front of these colonizers. He spent 27 years in jail. 27 years in jail. Okay. And later on, he negotiated an end to apartheid. Okay. Moved towards democracy. Towards democracy. Okay. We can write one more point over here, that his move, his ideology, his imprisonment, and his struggle, it brought him a global support. Not only Africans, but the entire world was seeing his struggle, okay, in the anti-apartheid movement. Okay, so this could be that, it brought him global support, international recognition. You can also write international recognition to the movement. 4-mark question, 4 points written. Okay, concluded with, saying that, Nelson Mandela's struggle is what brought, you can repeat the same point, or just change the wordings and write, brought the movement to its culmination and gave rights, equal rights to the blacks as well. Okay, avoiding any racial discrimination. All right. Refer to the image given below and describe the key events that led to feminist movements in 1960s. 1960s, we are talking about the feminist movements in 1960s. Okay, if you remember, there was a very prominent book in 1960s that was published. Betty Friedan's Feminist Mystique. Right? So the publication of this book was a major factor which brought the world, which brought this idea of the second wave of feminism in the 20th century. Okay? Please remember 1960s is second wave. I forgot to mention it. You can write it in the, you can write this in this also, in the introduction also. That 1960s was, gave way to the second wave of feminism. Okay? That began with, of course, the publication of Betty Friedan's, the publication and the, spread of Betty Friedan's Feminist Mystique. Okay? Then you saw that the National Organization for Women, National Organization for Women, was founded by Betty Friedan herself. Okay? This was done so that the American women could be brought to mainstream of the society.
And please, I'm mentioning the keywords only. These keywords I'm repeating again and again. Please make sure you're highlighting these keywords in your answers. Okay? All right. After the formation of now, you all know that this now was involved in a lot of protests and strikes to provide certain rights for women. Okay? Political rights, gender equality, reproductive rights. This is the same time when you have the suffrage movements, reproductive equality. Okay? So this is the same time when you have these movements being held. And the major point that was there was passage of Civil Rights Act of 1964. Okay? It prohibited discrimination on the basis of race, color, religion, sex, or even national origin. Okay? Along with this, you also saw Equal Pay Act of 1963. Now see, I am not going beyond these answers because what are they asking us? They are asking us the events of 1960s only. So let's stick to the events of 1960s only, and that's why these answers are more than enough for you all to, fit for this particular question. Okay? 4 marks, 4 points, and you can end with a simple conclusion that though the struggle for, the rights of women continues till date, but it was catalyzed by these movements, by these acts, by the book, okay, and by the continuous struggle that these women came up with. Okay? A lot of writers were writing. You go back to, modern writers. You had the publication of this thing, Mrs. Dalloway and stuff. Virginia Woolf's A Room of One's Own. Okay, so all these things, they were giving way to the feminist movements, but that was back. We don't need to incorporate to here because we are talking about the 1960s. So let's stick to 1960s only. Coming to section C. Okay. Analyze the circumstances that led the British government to send a cabinet mission to India. Quite simple, pretty straightforward. British was already seeing the struggle for independence and nationalism. The struggle for independence and nationalism was already prominent in India since long. The struggle for independence and nationalism was already prominent in India. Okay, certain nationalist movements, those made the cabinet mission to be sent to India under, of course, 3 people. Please mention this in the introduction. The number, sorry, A.V. Alexander, Stafford Cripps, Sir Pethick Lawrence. Okay? So mention this, that they, under their leadership, the movement, the cabinet mission was sent to India. Okay? Now, coming to circumstances that led. We're going to talk about only the circumstances that led the British government to send a cabinet mission. So when we talk about this, we can first talk about how Congress plus ML, that's Muslim League, their movements had gained impetus in India. Okay, their movements were at their peak in India at this particular time. Okay, they had gained more momentum, they had mobilized masses. Mobilized masses. All right, and there was a continuous demand for the end of colonial rule over here. End of colonial rule. Then
The second thing that you could put across, the persistent World War II going on. See, the British could not fight on both the fronts. It was becoming very difficult for them to fight on both the fronts at this particular time. So the persistent World War II going on, it actually, put a more pressure on them. Even there was a Western pressure, especially by USA, that end colonization now, liberate your colonies. Okay, because of that, there might be people who might want to side with the German power. Okay, there was a persistent Hindu-Muslim thing, Hindu versus Muslim thing that was going on. Communal tensions were building up in India. Okay, and British could not be involved in a civil war-like situation in India while World War was going on. Okay, and there were continuous protests that were already going on, protests and civil unrest. You can write it protests, but civil unrest that was already going on in India. So in light of all these things, the movement for independence intensified and people started demanding that please liberate us. And even, British thought that sending cabinet mission at this particular time could be the best alternative for us. And thus they did the same. I think next question is straightforward. The answer is directly given in your book. A lot of points have been mentioned. You can pick up any four key proposals of cabinet mission plan. 1946, let's say formation of undivided dominion of India. Okay, you can write about the provinces, the division of provinces into group A, B and C. Okay, you can write about how each group had the right to secede also. Where is it? Yeah. They gave them secession rights. They gave them formation of own constitution. Formation of own constitution. Okay. Groupings were done, in order to, signify Hindu-Muslim division. Okay. It also talked about an interim government to be formed. Okay. The cabinet mission plan with the support of major political parties. So this is pretty straightforward. The answer is given in your book directly. You can pick any 4 points from there. You can club them and write them over here. Provinces wala, agar in case you're choosing the provinces wala point, because I know that's a prominent point, couple it with, add one more line that the division was pretty clear, that it was done to divide Hindus and Muslims. The division made it clear. That's why even Jinnah got a hint that, okay, there's a little bit subtle hint of formation of Pakistan. Okay? Okay, how did these people now respond to cabinet mission plan? Who people? Congress and Jinnah. Both of them, let's discuss them separately. You can write 2 points or 3 points for each one of them. Okay? So how did they respond? We'll talk about INC. We'll talk about Muslim Leagues. Let's start with INC first. You can introduce this answer by saying that cabinet mission plan, it was intended at division of India. It was pretty clear. Okay, it wasn't mentioned directly, but it was clear. Okay, so it was, of course, though initially accepted by both of them. Okay, Muslim League accepted it because it thought that partition is there, Pakistan will be formed. Okay, so Muslim League's response, first INC's response. So INC's response, Congress did not accept the concept that only League can nominate a Muslim member. League nomination of Muslim member to Constituent Assembly. Muslim League said that whatever Muslim member goes, okay, it is us who will nominate them. Okay, but of course the Congress did accept the plan and it said we will participate in the formation of Constituent Assembly. So it did accept the plan. See, you see, Congress, it was willing to come up with some middle path.
so that things could have been sorted between these powers. Congress was willing to, now get independence, because they said that if we keep on fighting among ourselves, it may happen that British change their plan. So Congress did accept certain proposals. When it come to Muslim League, they also accepted. Later on, you will see they rejected also, calling direct action and stuff later on. But initially they accepted because they saw a subtle hint of Pakistan. Subtle hint of Pakistan among the groupings. Okay. You will see that when it comes to cabinet mission, the cabinet mission is initially rejecting this idea of a straight on demand for Pakistan. Okay, because it says that if we let you, let's say, if you demand Pakistan, then Hindus and others will also say, and that Hindus will come, Punjabis will come, that we also want a separate state of Bengal, or let's say Punjab. Okay, so cabinet mission did not directly hint at any formation of Pakistan, but B and C grouping under Muslim majority, जिन्ना साहब थॉट की चलो ठीक है हमें तो पाकिस्तान मिल रहा है, बी और सी ग्रुपिंग तो है ही है ना हमारी, मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुपिंग है, so he accepted the cabinet mission plan in that way. So you can write two things over here. Second point here is, subtle hint of Pakistan was there, grouping wala part you can write over here also, but later you can write that it rejected it when it saw that direct hint of Pakistan was not given, when eventually it saw that direct hint of Pakistan was not given in the cabinet mission plan. Ultimately unsuccessful in preventing the partition of India. Partition to hona tha. The amount of tensions that were created in India ever since the policy of divide and rule had started in India. Partition of Bengal से शुरू करो 1905 का, डिवाइड एंड रूल जो इन्होंने इवन आफ्टर 1858 उन्होंने शुरू कर दिया था अपना डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ मेजर स्टेप. तब से लेकर के जितना कम्युनल टेंशन उन्होंने बिल्डअप किया था ना इंडिया में, उसको दिमाग में रखते, उसको मद्देनजर रखते हुए देयर वाज नो ऑप्शन अदर देन द पार्टीशन. तो इतना कम्युनल टेंशन हो गया था. सो फर्स्ट रीजन यू कैन राइट इज ऑलरेडी prevailing communal tensions in India. Second reason हो सकता है groupings. जो कैबिनेट मिशन ने ग्रुपिंग करा था ए बी और सी, ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी, वो क्लियर इंडिकेशन था कि कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं. ओके. कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट, of course you know by whom, Jinnah plus Muslim League. तो इनकी कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट, उसी के अंदर इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी कॉल किया था. इनके कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट ने पार्टीशन को पार्टीशन होना था. ओके. Even if both of them were made to work together in the constituent assembly, आपने देखा था कि पटेल साहब और नेहरू साहब को इनको निकालना पड़ा था. तो दे Congress plus ML could not work together. It was tried and tested, but they could not work together. तो partition तो होना था. Clear? यहाँ पर हमको एक hint of partition मिल गया. Next आते हैं 11. The JP movement was primarily a protest against the authoritarianism of the Prime Minister and the corruption of the government in power at that time. अच्छा, इसका लंबा आंसर होगा क्योंकि the reason is 8 marks का क्वेश्चन है, तो लंबा आंसर तो होना ही है. So in light of the above statement, give an account of the movement's progress till the arrest of its leader. JP movement के लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण himself. तो शुरू से बिहार गुजरात से स्टार्ट करेंगे और जेपी मूवमेंट यानी कि अरेस्ट तक आएंगे हम. ठीक है. ज्यादा हमें इमरजेंसी एरा का जिक्र नहीं करना है क्योंकि वो अभी नहीं उस सवाल में है, हमें सिर्फ जेपी मूवमेंट की बात करनी है. तो वी कैन स्टार्ट बाय सेइंग दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट वाज फुल ऑफ करप्शन,
corruption and malpractices, इन्फ्लेशन इतना था, गुजरात का गवर्नमेंट का चेंज डिमांड हुआ था, बिहार में भी सेम डिमांड थी, है ना, गुजरात में डिमांड सेम हुई, बिहार में डिमांड सेम हुई, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। अथॉरिटेरियनिज्म टेंडेंसी कही गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को है, मिसमैनेजमेंट है, इतना ज्यादा प्राइस राइज हो रहा था, इतना ज्यादा गवर्नमेंट में करप्शन था कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई ऑल टुगेदर। और जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई तो गुजरात में फॉर्मेशन हुआ नवनिर्माण मूवमेंट का, स्टार्ट हुआ नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद बिहार में आते हैं, बिहार में प्रोटेस्ट 1974, प्रोटेस्ट तो पहले से हो गई थी, मूवमेंट स्टार्ट हो गए 1974 में, अगेंस्ट करप्शन, लैंड रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे ये लोग, इतना प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा था उसको डिमांड कर रहे थे। सो ये स्टूडेंट्स जो थे जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ये पहुंचे जयप्रकाश नारायण के पास, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ओके। जयप्रकाश नारायण के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको पावर से इतना अट्रैक्शन नहीं था, ही वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल, ओके। सो ये लोग पहुंचे जयप्रकाश नारायण के पास, ओके। ही सेड दैट ओके आई विल जॉइन द मूवमेंट, ओके। बाकी कुछ और पार्टीज भी थी जिन्होंने ज्वाइन कर दिया मूवमेंट, और स्लोली ग्रेजुअली इस मूवमेंट ने इम्पीटस गेन कर लिया, ओके, अक्रॉस इंडिया। उसके बाद बिहार छत्र संघर्ष समिति, आप ये पॉइंट भी ऐड करेंगे, बिहार छात्र संघर्ष समिति फॉर्म हुई, मूवमेंट को आउटलाइट लीड कर रही थी ये समिति, ओके। इन्होंने कॉल किया एट घेराव एट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्लॉक कर दिया रास्ते, ब्लॉकेट तैयार कर दिया, घेराव डिक्लेयर कर दिया। जब जेपी ने ज्वाइन किया तो इंदिरा गांधी अटैक्ड हिम, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को अटैक कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट, ओके, यू आर प्रोवोकिंग द वायलेंस। और जेपी ने उधर उल्टा कहा कि हमको टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, ओके। सो ही सेड स्टूडेंट्स स्टार्ट बॉयकॉटिंग एग्जामिनेशंस, बॉयकॉट एग्जामिनेशन, जितने एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना सबको बॉयकॉट कर दो। मूवमेंट ये भी कहा कि जितने एमएलए हैं सब रिजाइन करें, बट ये फेल हो गया, तो फिर जेपी साहब ने मिसेस गांधी को ही कह दिया रिजाइन करो भाई फटाफट से। जेपी साहब ने ऑपोजिशन को भी इकट्ठा किया, उन्होंने अपील किया ऑपोजिशन पार्टी से, तो सब एक साथ होकर के जनता पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। जनता पार्टी के फॉर्मेशन के बाद पार्टी ने ज्वाइन कर लिया स्ट्रगल, ओके। उसके बाद मुरारजी देसाई इनके लीडर बनने लगे, वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए डिमांडिंग इलेक्शन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके बाद इंदिरा गांधी का इलेक्शन क्या करा, उसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला डिसीजन आया तब तो मिसेस गांधी, तो शी कॉल्ड एन इमरजेंसी कॉलिंग फॉर द अरेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। इसी दौरान जेपी साहब भी पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे मूवमेंट को इम्पीटस दिलाने के लिए, कैटलाइज करने के लिए मूवमेंट को। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मूवमेंट ने इतना इम्पीटस गेन किया कि मिसेस गांधी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, नहीं तो उनको री इलेक्शन पे जाना पड़ता, री इलेक्शन पर जाती तो ऑपोजिशन तो पूरा यूनाइट हो गया था, हार जाती, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है सत्ता में रहने का, हम इमरजेंसी लगाएंगे। इमरजेंसी के अंदर वो अथॉरिटेरियन बन गई, हमने प्रेस वाला पॉइंट डिस्कस करा ही, अरेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स, ठीक है। The crisis of 1948 in Czechoslovakia, a bridge between Eastern and Western Europe, led to the completion of the Iron Curtain. Iron Curtain नाम किसने दिया था, पहले तो ये मेंशन कर देना, अब्राहम लिंकन ने। ओ सॉरी, माय बैड, कहाँ से अब्राहम लिंकन चल रहा है, चर्चिल साहब ने नाम दिया था, चर्चिल ही था ना, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, चर्चिल ही था। आयरन कर्टन आई थिंक विंस्टन चर्चिल ही थे, यस विंस्टन चर्चिल ही थे, आई एम श्योर।
ओके, सो क्राइसिस ऑफ 1948 इन चेकोस्लोवाकिया, अ ब्रिज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि ब्रिज क्यों बना था? ये ब्रिज क्या होता है? एक लैंड से दूसरे लैंड की तरफ। इधर वेस्टर्न पावर्स थी, इधर ईस्टर्न पावर्स थी। एक चेकोस्लोवाकिया बचा था जिसमें अभी किसी का कंट्रोल नहीं था। दोनों तरफ से आ रहा था कि चलो हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये एक ब्रिज था, लेकिन ये ब्रिज पूरा एक कर्टन बन गया जब इस पे कब्जा कर लिया कम्युनिस्ट ने। तो अब ये आयरन कर्टन बन गया, दीवार, जिसके इस तरफ थी वेस्टर्न पावर्स, इस तरफ थी ईस्टर्न पावर्स। ओके, अगर हम इसके इवेंट्स को डिस्कस करेंगे तो चेकोस्लोवाकिया, आई टोल्ड इट वाज द ओनली डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि ईस्टर्न यूरोप में था। और ये इसका टेक ओवर बहुत बड़ा शॉक था वेस्टर्न यूरोप के लिए। ओके, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट और लेफ्ट पार्टी थी, इन्होंने एक कोलिशन बना लिया। कब? 1946 में दे मेड अ कोलिशन। बट क्राइसिस आ गई 1948 में जब इलेक्शंस होने थे। तो कम्युनिस्ट को लगा कि कहीं ऐसा ना हो हम इलेक्शन हार जाएं, तो उन्होंने पावर को जबरदस्ती ले लिया। ओके, एक आर्म्ड कू ऑर्गेनाइज कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, जब ये आर्म्ड कू था तो उधर से वेस्टर्न साइड भी देख रहा था, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था। और इधर से कू चल रहा है, उधर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों के बीच में। ओके, बट प्रॉब्लम ये था कि ये रशिया के अगेंस्ट कुछ प्रूफ नहीं ला पाए। दे हैड नो प्रूफ अगेंस्ट रशिया। ओके, तो प्रूफ ना होने की वजह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय सॉलिड डिवीजन। ये कब्जा हो गया वेस्ट ईस्टर्न का, ये कब्जा हो गया वेस्टर्न का, और ये बन गया दोनों के बीच में आयरन कर्टन, जहां पर चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट पावर आ गए। इसके अंदर इसके बाद क्या हुआ कि अब वेस्टर्न पावर्स ने अपना कंटेनमेंट मेजर इधर शुरू कर दिया। इनको इन्होंने रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने इकोनॉमी इनकी स्टेबलाइज करने लगी मार्शल प्लान के तहत। ओके, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने लगी, या आपस में एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दिया उधर। ओके, ताकि अगर ये साइड मजबूत हो जाएगा तो यहाँ पर उसके बाद कम्युनिज्म नहीं आ पाएगा, which is why they started stabilizing. Okay, Marshall Plan था, you can write Marshall Plan, Truman Doctrine, ये सब implement हुआ. Okay, so that western side could be prevented from devastation and communist influence. इधर कॉमन फॉर्म हो गया, ईस्टर्न साइड पे कॉमन फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पर एक ये था कि हम जितने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले स्टेट हैं हम सबको यूनाइट कर देंगे अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, ये फिर से एक आयरन कर्टन को कंट्रीब्यूट किया कि दो तरफ सेपरेट आइडियोलॉजीज हैं, दो पावर्स सेपरेट हैं। सो यू कैन राइट ऑल दीज इवेंट्स, ओके, इन द लाइट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, yeah, we could say that an iron curtain was created between the two powers. ये थोड़े से लॉन्ग आंसर्स होंगे, आप इनको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो। ओके, सी द लास्ट 2 क्वेश्चंस, इनका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है बुक में, अगर आप देखोगे। डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948। अगर हम कॉजेज पर जाते हैं तो कॉजेज, सबसे बड़ा कॉज ये था कि इजराइल जो अरब्स थे, अरब्स एंड ज्यूज में जो कंटिन्यूअस क्लैश चल रहा था वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था। Israeli people, they wanted their home in Palestine, and okay, and Arab insistent, they kept on denying it कि आपका घर नहीं है यहाँ पे। तो clash between Arabs and Israelis, Arabs versus Israelis का continuous clash, okay, Arabs का continuous domination, power for, struggle for domination, domination तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे Jews Israelis dominate कर रहे थे, struggle for domination, thinking they can unite and they have control over all the world. Okay, ये चल रहा था, इनको कंट्रोल चाहिए था। Jew Israelis
हिस्टोरिकली यहाँ पे रह रहे थे। मामला कहाँ से गड़बड़ हुआ था, जब ब्रिटिश ने दो काम किए, एंड यू नो आई डिड डिस्कस्ड इट इन द लेक्चर। एक तरफ एक तरफ रशिया के साथ अग्रीमेंट, एक तरफ इनके साथ जूस के साथ अग्रीमेंट, एक तरफ अरब्स के साथ अग्रीमेंट। तो ये तीन तरफ से जो अग्रीमेंट हुए थे उसमें ये सब मामला एकदम खराब हो गया था, फंस गया था। ओके, 4 पॉइंट आप कॉजेस के लिख दो, 4 पॉइंट आप रिजल्ट्स के लिख दो। ओके, यहाँ मामला फंसा। उसके बाद क्या हुआ, दो रीजंस तो ये हो गए, अरब इजरायली और ब्रिटिश वाला रीजन। ब्रिटिश ने जो पार्टीशन किया था, ये थर्ड रीजन हो गया। इनका जो प्रपोज्ड पार्टीशन प्लान था कि हम पार्टीशन कर देंगे दोनों एरियाज का, तो वो एक और रीजन बन गया दोनों के बीच में। डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो हो गया कि हम पार्टीशन कर देंगे दोनों एरियाज को। और पार्टीशन करने के बाद जेरूसलम वाला एरिया हो गया यूएन के पास, बाकी सब इनके पास था। जूइश पीपल जो थे वो एक्सीलेंट इन डिप्लोमेसी थे, और अरब्स जो थे थोड़े से वो उसमें मसल स्ट्रेंथ में बिलीव करते थे। तो यहाँ पर एक और मामला फंस गया आकर के। ओके, अरब्स वर वायलेंट, दे वर इमोशनल। सो वेस्टर्न पावर्स का सिंपैथी किसके साथ गया, जूस के पास गया, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिकली डील किया सिचुएशन के साथ। इसके अलावा एक कोल्ड वॉर सिचुएशन चल रहा था ऑलरेडी। तो उस कोल्ड वॉर में ब्रिटेन एंड ऑल अदर कंट्रीज वो प्रिवेंटिंग कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी सिचुएशन एग्रेवेट हो जाए। तो यूएस फेवर कर रहा था इजराइल को, सोवियत अरब्स को सपोर्ट कर रही थी, दो और वो हो गए, बाउंड्रीज बन गए आकर के। ओके, रिजल्ट्स में आप लिख सकते हो कि इजराइल का फॉर्मेशन हो सकता है, एक पॉइंट। इजराइल का सक्सेसफुल डिफेंस हो सकता है, दूसरा पॉइंट, कि इतने सारे अरब नेशंस एक साथ यूनाइट हो गए तभी इजराइल ने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया अपने आप को। ओके, उसके बाद पैलेस्टाइन का पार्टीशन वाज वन रिजल्ट। ओके, काफी टेरिटोरियल चेंजेस हो गए थे, इजराइल को ज्यादा टेरिटरी मिल गई थी। ओके, इसका एक और रिजल्ट था, चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हो, कि कितने पैलेस्टीनियंस यहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। That could be one more point, the displacement of so many Palestinians from Israel. अच्छा, कैम्प डेविड अकॉर्ड पे आते हैं, तो इसके आंसर्स डायरेक्टली 4 पॉइंट्स आपकी बुक में है। प्लीज राइट, 4 पॉइंट्स ही हैं, चारों को उठा के लिख दो और खत्म करो। कैम्प डेविड अकॉर्ड के क्या टर्म्स थे, वो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। ऑलराइट, 4 सिंपल से पॉइंट्स दिए हुए हैं कैम्प डेविड के उसमें। ओके, कि इजिप्शियंस और इजरायलीज के बीच में वॉर एंड होगा और इजराइल वापस कर देगा सिनाई। ओके, इजिप्ट भी अपना सुएज कैनाल का ब्लॉकेट हटा देगा, गल्फ ऑफ अकूबा का भी ब्लॉकेट हटा देगा ताकि इजरायली शिप्स चली जाएं। ओके, और इजिप्ट प्रॉमिस करेगा कि वो अटैक ना करे इजराइल को दोबारा। ओके, 4 पॉइंट्स थे, दे दो। इजिप्शियंस एंड इजरायली स्टार्ट नेगोशिएशन, ये रीजन इसका सबसे बड़ा था, इनका इकोनॉमिक इशू। ओके, चेंज इन लीडरशिप, हारने के बाद आइसोलेशन इजिप्ट का, ये रीजंस थे कि उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए और इवेंचुअली इजिप्ट पहला नेशन बन गया टू व्हाट डू वी से, टू रिकॉग्नाइज द स्टेटहुड of Israel. Okay, well that's pretty much it for these papers. Direct कुछ answers के आपके direct points हैं तो उनको directly ही mention कर दीजिए, and yep, in case of any doubt, in case of any confusion, do let us know. Hello.